and they have the data for last 100 years, everything recorded. तो it has worked. And another reason, see, मैं क्या मानता हूँ इस चीज में, बसंत महेश्वरी जी का एक इसमें इंटरव्यू है, वो बोलते हैं लोग घरों से अमीर नहीं बनते हैं, लोग अमीर बनते हैं फिर घर खरीदते हैं. Yeah, well said. राइट, So true. सो ट्रू. Very well said. आप लोग है ना, बिजनेस करके आप पहले धंधा करके पैसा कमाते हो, धंधा जब अच्छा चलता है, कुछ 2 पैसे घर पे आते हैं, तब आप एक प्रॉपर्टी खरीदने की सोचते हो, राइट, आप घर में शादी करते हो. तो सबसे ज्यादा कमाई हमेशा धंधे में आएगी. मैं आसाम से आता हूँ, आसाम में बहुत सारे मारवाड़ी लोग हैं. हम लोग कई बार हम लोग कहते हैं कि मारवाड़ी गुजराती को बहुत अकल होती है कंपाउंडिंग की, बट इट्स नॉट होती है ना? डेरोगेटरी स्टेटमेंट, इट्स नॉट, बट एक्चुअली कंपाउंडिंग बहुत कम लोगों को समझ में आती है. तो वो क्या करते हैं वहाँ पे, आसाम में भी वो लोग जमीन खरीदते हैं और वेयर हाउसेस बना के रेंटल पे लगा देते हैं, और वो बड़े खुश होते हैं कि मुझे 8% रेंटल यील्ड आ रही है. तो मैं उनको एक ही एग्जांपल देता हूँ कि तुम 8% में खुश हो रहे हो, तुम देते किसको? तो बोलता है बड़ी बड़ी कंपनियां आके हमसे लेती है, आईटीसी, एचयूएल वगैरह सब. तो मैं उनको बताता हूँ कि देखो, मैं उन सब कंपनी का मालिक हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में सारी कंपनी से तो मैं मालिक हूँ. मैं अगर आपको 8% पे ये दे रहा हूँ, तो सोचो मैं क्या कमा रहा हूँ, तभी तो 8% पे मैं आपसे प्रॉपर्टी पे रेंट वेयर हाउस ले रहा हूँ. मेरा मार्जिन 12, 13, 15% होएगा, तो मैं 8% रेंट चुका पाऊंगा ना. तो आई एम गोइंग सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग कि मुझे उसके पास जाना जो सबसे हाईएस्ट कमा रहा है. और आज मेरा धंधा अच्छा नहीं चलेगा, एचयूएल का ऐसा, तो मैं आपकी जमीन लूंगा क्या, मेरे वेयर हाउस? तो फिर आप किसको दोगे? Absolutely. तो फर्स्ट द इकोनॉमी हैज टू वर्क वेल. सेम चीज हमने, बिल्डर ने एक प्रॉपर्टी तो खड़ी कर दी, उस पे रेंट पे, कोविड में तो सब खाली हो गई थी, तो जॉब्स ही चली गई हैं. अगर अब इकोनॉमी बंद हो गई है तो रियल एस्टेट का भी वैल्यू नहीं होता है. तो आई हैव ऑलवेज बिलीव इकोनॉमी हैज टू डू मच बेटर. इकोनॉमी अच्छी करेगी तो जॉब्स अच्छे करेंगे, बिजनेस अच्छा करेगा, तब आप जाके कुछ गोल्ड खरीदोगे, तब जाके आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदोगे. तो द फर्स्ट डेरिवेटिव इज दिस कि आपकी इनकम आपके बिजनेस धंधे से ज्यादा आती है. The highest return you can earn is from your business, but not everybody can be business owners. Then the next best is as an investor, by becoming owner of Reliance Industries or HUL or Uday Kotak. तो आप वो मेहनत करें और आप पैसा कमा रहे हो, and if you can make 12 to 15% return, which is crazy, इससे वेल्थ बनाओ. फिर आपको घर खरीदना है कंजम्पशन के लिए, आप खरीदो. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज फाइनेंशियली CAGR लाइफ में, राइट. बट हाईएस्ट CAGR in my view or highest compounding in my experience, in the most democratic way, I've seen in equities through mutual funds in the last 20 years. And I've traveled across the world. I've met thousands of investors. Very few investors I meet like Mayank, who has made terrific wealth out of real estate. Most of them have been on the losing side because they're not investors like him. They're common people like us. No, also I would say more like investment. This is business for me. This is business for him. This is not like a passive investment. कि करके छोड़ दिया. I'm actively looking at it. It's my main business. Correct. So it's not really a diversification. For him, land is a current asset and not a fixed asset. Yes. For us, it's a fixed asset. If we- Precisely. And also it's very So for him, opportunistic. land You is can't- not, for him, in his language, land is not a capital gains. It's a business income. it's Correct, like a yeah. stock. It's like a stock. It's a business income. For us, it's a Business capital stock. asset. So it's Correct. not for me लेके छोड़ दिया. Yeah. Diversify करने के लिए ले लेते. My main business. Yeah. Trading. So Mayank, tell me one thing. तो अभी जैसे आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट हो, तो क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, बट फर्स्ट मयंक, तो अभी अपॉर्चुनिटीज अगर आइडेंटिफाई करनी, किसी को इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में, इन लेट्स से प्रॉपर्टीज, कौन से लोकेशंस है आपके हिसाब से जो एकदम अंडररेटेड है एंड वहां पर आपका व्यू है कि हाँ ये लोकेशंस में इन्वेस्ट करोगे तो मतलब प्राइसेस बढ़ सकती है? I think holiday home, you have to study what sector first is doing well within real estate. What is doing well? Abhi, what's happened since COVID is holiday home segment बहुत undervalued segment था इंडिया में. आप किसी को भी देख लो, बहुत कम लोगों के पास फार्म हाउसेस थे. एस्पिरेशन था, इट्स एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट. कोविड के बाद लोग ने क्या सोचा कि यार चलो सिटी से गार्डन चाहिए. बॉम्बे में nobody has a garden, right? Which is why now farmhouses का concept kicked in, and this is throughout India, right? So I would say look at places that are holiday home friendly, like the top areas of holiday homes. I would say Goa has done phenomenally well over the last 5 years. Alibag has done phenomenally well because it's the Hamptons of Mumbai, right? New York, you see the Hamptons, right? So this is like Alibag is financial capital के बाजू का एक holiday home है near beaches.
where आप एक बंगलो खरीद सकते हो, 40,000 square foot, 1 acre के ऊपर you can have a lavish villa and all of that. That's why Alibag is done well. When you say phenomenally well, क्या मीनिंग कर रहे हो, कितना रिटर्न? मैं सिर्फ लास्ट 5 years के बारे में बात करूंगा. I'm only talking about boom cycle, ना? Yeah. Please don't get me wrong. So this is a biased answer, only boom cycle, because a lot of people जिन्होंने अलीबाग लैंड होल्ड किया है 30 साल, 10 साल कुछ नहीं हुआ है. I'm taking the last 5 years which have been the best for Alibag. So last 5 years में it's gone, I can say comfortably, अगर आप एक अलीबाग का मैप लगाओगे इधर, एक डार्ट लेके डार्ट फेंकोगे मैप पे, in most places in Alibag, blanket the rate has gone up 4 to 5x. 5x in 5 years. Yes, 4 to 5x. Wow. But this is again the best boom cycle of Alibag. Don't, अगर मैं आप 10 समझ गया. 5 to 6 has been very good. Actually, in fact, it works with all asset classes. आप देखोगे ना, चाहे equities हो, 80% of your returns come in 20% of the time. गोल्ड भी है, 20-80 rule applies. हर जगह होता है. गोल्ड में भी 8 साल 2011 से लेके 2019 तक कुछ नहीं हुआ, और 2019 से लेके 2025 में बूम आ गया. प्रॉपर्टीज में हमने देखा, स्टॉक्स में भी, म्यूचुअल फंड्स में भी, सब जगह ऐसा ही होता है. सो दैट इज वेयर द क्रक्स इज, जब वो रिटर्न नहीं बने तो आप बैठ सकते हो क्या? कैन यू सिट टाइट? That's the वेदर प्रॉपर्टी में बैठना इजी है कंपैरेटिवली, बिकॉज आपको बायर से नहीं मिल रहे हैं, आप बेचना चाहते हो, निकलना चाहते हो, लेकिन बायर से नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है, आपने बटन दबाया तो हो गया. एंड दैट इज वाई लोगों को दिमाग में कैलकुलेशन रहता है कि मेरा प्रॉपर्टी में पैसा बनता है, म्यूचुअल फंड में नहीं बनता है. In fact, I would say as a discipline, mutual fund is great, right? To diversify. आपको कुछ करना नहीं है, right? They're beautiful, very intelligent managers who manage everything for you, right? So I would say अभी underrated locations क्या हैं? One is, I would say Goa, I would say Alibag, I would say look at other locations around big cities that are coming up in the holiday home sector. Hyderabad is a very booming city. They have sold maximum after Delhi, NCR, and after Mumbai. Last year, Hyderabad sold the most number of luxury homes. And luxury home ki value is above 10 crores. Assuming above 10 crores, Hyderabad was the number 3. Beat Bangalore and Pune. So look at holiday home areas near Hyderabad. Right? Because now more people are buying holiday homes. That's number. Second is tourism home options. Tourism. Religious. धार्मिक जो स्थान होते हैं वहां, अयोध्या. बट उसमें ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये स्टोरी तो पता चल गई है, तो अब तो बहुत इन्फ्लेट हो चुके हैं. Exactly. So before the verdict, after the verdict, massive difference in the pricing. Yeah. कितना डिफरेंस होगा? Again, 10x, मतलब आप बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. 7 to 8x. Also, Ayodhya as a place would have been stagnant for 20 years. You have to realize कुछ नहीं हुआ था ना. 20 साल कुछ नहीं हुआ है उधर. Right? And so it's pent up frustration of 20 years catching up in 3-4 years. Right? So it's your entry exit. It really matters, and a lot of it is luck. Nobody could have predicted the verdict of Ayodhya. Let's be honest. Right? But Ayodhya has given a lot of returns to people. So I would say, think of the sector like holiday homes. Agar aapko, for example, if you are bullish in warehousing space, अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं, like he said, go to the main source, na, the company, right? You would buy a warehouse from a small warehouse. You can buy a unit, starter sale unit, and you can rent it for 5-6%. In Bombay, Bhiwandi में 5% मिलता है, 6% मिलता है. Little bigger investors, right? Not as big as institutional investors, but who can spend up to 40 odd crores, right? Can also go directly to a company and do a made to suit warehouse. It'll be like I won't say it'll be A plus grade, but like say an A minus grade warehouse. जैसे for example, मैं Amazon use कर रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, right? You can go to Amazon and tell them, okay, what type of warehouse? Amazon is a very big company, but a smaller version, right? What type of warehouse do you want? मेरे पास land पड़ा है, मैं आपके लिए build to suit बनाता हूँ. उसमें आपका rental income obviously will be 12 to 15%. But again, where you are doing then it becomes business for you because you're building it. It's not easy for everybody to replicate this. He can do it because he knows in and out. He knows he has that kind of context. Not common for this thing. So I would currently, for going back to your question, Goa was great. I think Alibag was great. All
satellite towns or holiday home towns near big cities were doing phenomenal. From a big city perspective, I would say Hyderabad has done very well in the luxury segment again. So Gurgaon has been, I think, apartments mein for appreciation. Bombay mein apartments don't appreciate. This is the hard truth. और सब लोग बोलते हैं real estate doesn't appreciate. Please start saying apartments don't appreciate. Correct, I agree. आप मतलब मैं बोल दूं equity doesn't appreciate. Correct, yes. Because your stock didn't do well. I agree with you on So this. please, people have to stop saying that. I Real estate में इतने different asset classes है. Come, I can show you some parcels which are in distress sale today. Problem है उसमें. Solve it, you can make decent money, right? So apartments in at least Mumbai are kind of slow right now, which is the truth. और आपने बिल्कुल सही कहा. Even in very successful buildings, look at Planet Godrej for example. It's a very successful building. वहाँ 20 साल में, I think 20 years back, 5,000 रुपए per square foot भाव था. आज 60,000 रुपए, 60 से 65,000. So that's about a 12x, which over a period of 20 years would account for again about 13% CAGR. Correct. So that's a successful building giving you 13%, which obviously mutual funds will outbeat. Correct. Right? जैसे आपने समुद्र महल का उदाहरण दिया. So same way, when you say real estate doesn't make you money, residential apartments are, like I said in the starting, stability. But in the end, देखिए आप रहोगे कहाँ? You need a house, na? If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.